So, welcome everyone to the Online Entrepreneur Show. We have an amazing guest today, an amazing personality, Abdullah Ansari. Hey man, always love to be with you, either on stage or physically. You are a super energy bomb. So, those who are watching me live, type quickly hashtag live, and those who would be watching it replay, type hashtag replay. And I want you to press that heart button or care button or whatever you like. Just press that button as hard as you can and as multiple times as you can so that this particular live reaches to everyone in this Facebook group, because Abdullah is going to give so many golden nuggets to you guys. So that's the reason we wanted to reach to everyone. So yeah. Okay, let me quickly introduce Abdullah. Abdullah Ansari is someone who has made more than 1 crore revenue. I'm sure he will be revealing the present revenue, but I'm just telling you the the 1 crore figure. So he is a wedding photography business coach in India. And Abdullah, just correct me, are you the only single person who is into wedding photography business coaching in India? Actually, yeah, you could say that I am the one who is actually very aggressive doing all this, because a lot of people came, but they did not have the vision, so they left. But for the last 2 years, it has been a consistent game on thing for me. Awesome. Amazing. So yes, guys, sit back, relax for another 30 minutes or so, and we'll be asking Abdullah right questions which will obviously benefit you in your business, right? So obviously we will also come to know Abdullah as a person, because I know he's one of the greatest persons I've ever met, right? Period. Right? So yeah, Abdullah, we would love to start with your journey, because we would love to know you as a person, and my audience would also love to know you as a person. Tell us about your journey, especially in the business, how you started this game. Okay. So I came into, I don't know, I'll speak in bit of Hindi as well in between. So थोड़ा flavor अपना हिंदी वाला चाहिए हमको. Okay. So I went to Indian Institute of Management, IIM, in 2016 after 2 failed attempts of CAT. So IIM में जाने के लिए ना एक CAT exam देना पड़ता है, बहुत tough होता है उसको crack करना. It was very tough. Yeah. I failed 2 times in that. But somehow I kept on trying. Everyone said, छोड़ दो, competitive exam ये वो. But my heart was, मेरा दिल में था कि यार MBA करना है, Master of Business Administration, business चलते कैसे सब देखना समझना है. तो करते रहे. तो तीसरी बारी में क्रैक कर दिया एग्जाम, ठीक है. और somehow I got into IIMs. अब वहां चले गए तो थे वहां पे नौकरी ये सोच के कि यार किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लगेगी. I would go in some big short company. I would be living a good lifestyle. But when the placement time came up, something inside me shifted. कुछ अंदर मतलब कुछ क्रैक हो गया मतलब. तो all of a sudden मैं placements में बैठ रहा था companies के, but immediately in one night I took a decision that I will not sit in the placements anymore company, and I decided I will not take any job and I'll do something. देखी जाएगी क्या करेंगे. So मुझे photography थोड़ी आती थी. I used to know photography. So I said चलो photography business में कुछ करते हैं. तो जॉब छोड़ी, घर पे आए, दिल्ली आए, काम करना स्टार्ट किया. When you have the clarity in your life, जब क्लियर होता है ना कैसे मार्केट में जाएंगे, ऐसे कस्टमर मिलेगा, इतना पैसा बनेगा, इतने रेवेन्यूज बनेंगे, इतना खर्चा आएगा, और आप MBA थोड़ा बहुत कर लेते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है. ऐसा नहीं कि MBA नहीं करोगे तो नहीं आएगा. मैं शायद नहीं करता, तब भी मैं करता. और हार्डली मैंने बिजनेस स्कूल में जो सीखा वो यूज किया, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ने बहुत सिखाया जब मैं उतरा. तो करे 2 साल किया, 2018 से 2020 किया, बहुत अच्छा किया, अभी भी चल रहा है. तो मुझे पावर समझ में आ गई, अब जानते हैं लोग. तो जब शुरू में किया था तो पहले साल 30 लाख का टर्नओवर किया था, फिर दूसरे साल किया तो 60 लाख किया, तीसरे साल 1 करोड़ कर दिया. अब हम लोग हर साल मल्टीपल करोर्स करते हैं. So you mean this was your first business of your life?
Yes, that was my first business to shoot the to get the wedding shoot. Wedding films बनती कैसे हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली दिल्ली के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर ना वेडिंग फिल्म्स का बहुत क्रेज रहता है। तो लोग बहुत शोशा करते हैं। पंजाबी अगर देख लोगे ना तो उनको तो पूरा दिखाना है, उनका लोकेशन ढोल धड़ाके दिखाने, तो वो पैसा खर्च करते हैं खूब अच्छी फोटोग्राफी में, सिनेमाटोग्राफी में, फिल्म मेकिंग में। सो आई डिड दैट एंड अब मैं उसको कैसे ग्रो करते हैं उसकी भी कोचिंग, आई हेल्प फोटोग्राफर्स टू ग्रो दैट। So that is how you started. Okay. Yes. So, I mean, I am shocked. This was your first business and you are cracking 30 lakhs and 60 lakhs of revenue. I mean, was this business mindset, I mean, did this business mindset came to you from the IIMs or कुछ parental है, कुछ वो बोलते हैं ना कि जब आप एक कदम चलते हो दूसरा रास्ता दिखता है, दूसरे रास्ते पे पहुंचते हो तो तीसरा रास्ता दिखता है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं एक डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट करूंगा। सो आई वुड ऑलवेज विश, मैं बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को देखता था, वो देखता था वो सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, मल्टीपल बिजनेसेस चलाते हैं। तो मेरे मन में हर काम को देख के ऐसा लगता था यार इससे बिजनेस वगैरह बन सकता है कि नहीं, तो ऐसा रहता था। तो पहला मैंने स्टार्ट किया बिजनेस वो था वेडिंग फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग का। दूसरा जो मैंने स्टार्ट किया वो था फोटोग्राफर्स को कैसे ग्रो करना है उसकी कोचिंग का, सो कोचिंग बिजनेस। और तीसरा मेरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी। सो कलेक्टिव रेवेन्यू जो होता है from all my businesses every month is average around 50 lakhs rupees per month. So we do around अभी तो हम लोग स्टार्टिंग फेज में, तो हम लोग साल में 6 crores करते हैं। I wish it will go to 50 crores in the next few years for sure. स्टार्टिंग फेज बोल के आप मेरी ऑडियंस का दिल तोड़ रहे हो। अच्छा, no, it is possible. Obviously, this is where we would love to reach. Definitely. Yeah, it is a starting phase for me, I'm telling you. क्योंकि मैं जब लोगों से मिलता हूँ ना जो इतना बड़ा कर रहे होते हैं, मतलब अभी जब हम लोग FBRE में थे तो वहां पे मंजूनाथ थे, he said he did 10 crores। तो चलो 10 crores तो चलो एक इनकम वाली बात अलग है, लेकिन अपने अंदर ना एक लेवल सेट हो जाता है कि यार मतलब इट इज अचीवेबल, अचीव कर सकते हैं। तो फिर अपना मन मानने को तैयार नहीं होता कि यार इससे नीचे भी कर सकते हैं, तो ऐसा एब्सोल्युटली एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाता है। यस, न्यू नॉर्मल। अभी तो अगर मंथ में अगर मैंने पहले जब मैं 2017 में, जब मैंने 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो तब मैं 1-1.5 लाख में खुश हो जाता था। अभी अगर मैं 1-1.5 लाख में चला जाऊं तो मैं तो डिप्रेशन हो जाएगा मुझे कि यार ये क्या हो रहा है जिंदगी में। एब्सोल्युटली फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बंदा अगर एक मानो 50,000 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है, नाउ ही कैन नॉट गो बिलो दैट। यस, वो दैट्स द थिंग। सो दैट्स द न्यू नॉर्मल वी आर सेटिंग, एंड आई थिंक प्रॉपर नेटवर्किंग, कनेक्टेड विद द राइट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो न्यू नॉर्मल सेट करने के लिए, वो अचीवेबल दिखने के लिए, 50 lakhs a month अचीवेबल दिखने के लिए, आई एम श्योर यू वुड बी सराउंडेड with people who are doing 50 lakhs and more. Yes, 100%. So I have a lot of I invest in a lot of courses. मैं मेरी शादी होने वाली है, तो मेरी फियांसे तो मुझे पूछ रही है मुंह दिखाई में क्या लोगे। मैंने बोला मुझे ये वाला कोर्स दे देना। तो I want to do an AI course. So that is somewhere around, I wanted to do, बस मैंने ले लिया अभी। That is around 55,000 का था। मैंने कहा कि यार मुंह दिखाई देगी तो मुझे यार मुंह दिखाई में ना मुझे कोर्स ही दे देना। मैं I want to upgrade my skills. So yes, so I believe कि learning बहुत जरूरी है, because ऐसा है। हाँ, तो it is like this. Great. And यहाँ से मेरे को एक चीज समझ आ रही है, what I have noticed in my audience is, and the people who are starting, they are not clear about the niche, right? They're not able to figure out, okay, what should I be taking forward? They feel like, okay, I know this also somewhat, I know this also somewhat, ये भी थोड़ा आता है, ये भी थोड़ा आता है, लेकिन किसको पकड़ के आगे बढ़े? So how did you figure it out for yourself? I think you started with wedding, I mean photography. I'm sure उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी उस टाइम पे. For me it was very simple, Rahul. I'll come to that. देखो एक बात समझ लो भाई, आज के टाइम पे सबसे बड़ी स्किल अगर आपको करनी है ना, तो वो है डिजिटल मार्केटिंग स्किल. अगर आपको कोई स्किल आती है, अगर आपको मार्केटिंग स्किल आ गया ना, तो आप प्रोडक्ट बना के बेच पाओगे, वरना हमेशा बेचने के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहोगे. तो 2014 से
मेरा हमेशा से इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में रहा, क्योंकि मुझे पता था, मैंने 2014 में ही एक किताब पढ़ी थी बाय रश्मि बंसल, उसका नाम था स्टे हंग्री स्टे फुलिश, ठीक है। वो स्टोरी थी 25 ऐसे आईआईएम पोस्ट ग्रेजुएट्स की जिन्होंने आईआईएम में जाने के बाद अपना खुद का बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया। तो जब मैं इनकी स्टोरी पढ़ रहा था ना, तो बस मुझे एक ही बात समझ में आई, आई जस्ट गॉट टू नो वन थिंग, दैट यू नो कि वन स्किल दैट यू नीड टू नो इज द मार्केटिंग स्किल। आप प्रोडक्ट अच्छा बना लोगे, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग करना नहीं आया तो आप फ्लॉप हो जाओगे। तो आई स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज, कैसे सेल्स करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो 2014 से किया। तो 2018 में जब मुझे फोटोग्राफी का आइडिया आया, क्योंकि थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करता था, तो मुझे समझ में आया कि यार मुझको फोटोग्राफी तो आती है, मुझको डिजिटल मार्केटिंग भी आता है, मुझे क्लाइंट्स लाने भी आते हैं, तो मुझे किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो या किसी को सिखाना चाहते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ठीक है, पहला जो आपको सीखना है। लेकिन आप लोगों को बताओगे क्या, व्हाट डू यू वांट टू टीच? फॉर मी इट वाज वेरी सिंपल, फॉर मी इट वाज फोटोग्राफी। जब मैंने फोटोग्राफी का बिजनेस ग्रो किया, I came to know that I grew my photography business to multiple crores of turnover. Then I thought, let's teach this to the entire nation, because I did it something experientially. So I had the confidence to teach to the people. But here what happens, a lot of people do not know what they want to teach. So you know, for you, just go in your past, in your life, there must be something which you would have achieved. कुछ तो ऐसा होगा जो आपने अचीव किया होगा। इनकेस अगर आपने नहीं भी किया, तो कोई ऐसा स्किल सीखो, उसको मास्टर करो, उसको अच्छा करो, और फिर अगर आप उसको लोगों को सिखाना है, तो आप उसको प्रोग्राम्स कोर्सेज के थ्रू तो आप कर सकते हो। सपोज करो, आई नो अ ट्रेनर, हिज नेम इज संदीप बंसाली, आप वो डिजिटल मार्केटिंग बताते हैं, तो वो भी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। बिफोर 2 years he did not know what is digital marketing. He learned himself digital marketing first. उन्होंने पहले खुद सीखा, सीखने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस किया, और फिर जब उसमें कॉन्फिडेंट फील हुआ और उनको रिजल्ट्स आए, then he started to teach to the other people who are looking to know the digital marketing. Correct. So what you want to teach, you should first do that. So it's a 3 triangle formula: learn, do, and teach. Absolutely. That's it. Absolutely. That's what the thing is. What I could get the crux is go out there and get a skill. Yes. Master a skill first. Yes. And then only you can, get into a coaching business. Otherwise, I think best way is to become a freelancer in that particular thing. Yes. Make some money from freelancing, and then definitely you can experience it. Absolutely. Yeah, experience that and come here. So yes. How do you sell it? I mean, how did you start it with? Did you start through organic methods on social media, or you started with ads? शुरू से वही ऐड चलेंगे हमारे। I would run ads. मुझे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता। मेरे पेज पे 15 फॉलोवर थे, 15-20 फॉलोवर थे मेरे पास। मुझे डिजिटल मार्केटिंग में I learned the ads. I knew if you want speed, then I have to go in the ads. My product was solid. I had the confidence. I just ran the ad. But in the first webinar, I had 0 sales. So I went into the immediate depression in the webinar only. I could not figure it out. Yeah. So what was happening? I can relate. Yes, I was just giving the offer. Nobody was buying. I was just thinking, यार कि तो हो ही नहीं रहा, कुछ फ्लॉप हो गया शो यार, अब नहीं चलेगा. Then when I go into, when I'm sad, I go to sleep. तो मैं वेबिनार के बाद जाके सो गया, ठीक है. That is my way. Oh my God, these are similarities between us. तो मैं जाके सो गया. तो जब मैं सोया तो मेरे पास फोन आया एक पार्टिसिपेंट का वेबिनार से, बोला सर आपने जो कोर्स किया ना मुझे करना है. उसने बोला सर मुझे लेना है. मुझे समझ में आ गया अगर एक पर्सन को इसकी जरूरत है ना, तो हजारों हैं और लाखों हैं. और दैट वाज द ब्रेक थ्रू मोमेंट फॉर मी. तो दैट्स इट. तो उसके बाद से तो देयर वाज नो सीइंग बैक. उसके बाद टगाटक. सो नो सीइंग बैक. तो तब से तो चल रहा है. अच्छा, great. So I'll share my experience of webinars. So I mean, just tell me how close you were with that. So I started with webinars through paid ads. I mean, in 2022, earlier I was doing organic, and then I have tested everything, organic, paid ads, everything. So when I started with paid ads in Jan 2022, so first webinar, no sale. Second, I think 1% took it. Third, again 2 sale. I was happy, yay. Then again coming back to 1 and 0, and then 1, 2. So how was your scenario? अच्छा, मेरा ऐसा था. The first was 0. Second was, I think it was 7.
Acha. 7. And then 7, 8, 7, 8 like this, because what happened when the webinar did not work, I went into the 15 days hibernation mode. Like, and I went and learned 15 days. Day in, day out, I would watch a lot of people webinar. Kaun kya bol raha hai, kaise bol raha hai. Rajiv Talrejas, Siddharth and all these people, Saurav Jain and all. I would just, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उनका हायर प्रोग्राम्स लेने के लिए. तो मैं क्या करता था ना, मेरे पास सिद्धार्थ का गोल्ड प्रोग्राम भी नहीं था, तो सिल्वर ही था. तो मैं ना उनको देखता था, सुनता था और लिखता था, यार यहाँ पे वाली बात बोली तो क्यों बोली. अभी देखो जो मेरे पास ये डायरी है ना, ये मेरी 2020 की डायरी है. इस डायरी के अंदर अभी भी उस जो मैं वेबिनार डिकोड करता था, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे, कैसे लोग कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल डिकोड करके दिखता था. अभी भी इसमें होगा. आई थिंक आई मस्ट हैव दैट. मतलब कोइंसिडेंटली यही रखा हुआ है. ये देखो पूरा रखा हुआ है, पूरा डिकोडिंग लिखा हुआ है इसमें. आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि नहीं, ये पूरा है. मतलब दिस इज अ पूरा, मैंने लिखा हुआ डिकोडिंग 90 मिनट्स वेबिनार. और ये पूरा लिखा हुआ है कि 2:05 पे उन्होंने बोला, आई एम गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट फॉर्मूला दैट विल चेंज द मार्केटिंग ऑफ योर. फिर उसके बीच में 2:40 पे ग्रेटिट्यूड किया. तो मैं वेबिनार बाय वेबिनार जाके लोगों को स्टडी किया. फिर मैं जब मार्केट में उतराना तो मैंने बैंग ऑन कर दिया था. तब मुझे समझ में आ गया था कि भाई इट्स अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन. द डेप्थ ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स, how much depth, how much deep attention you pay to your life. If you know the art to pay the attention and to observe it, you will crack anything. Definitely. So I observe a lot. That's one of the, I don't think lot many people even do that. अगर फ्री में भी हमें कोई वीडियो मिल जाएगा, regarding webinars, how to crack them, even then people will not sit and decode it. Yes. So that's something unique thing which you did, obviously. Even आज भी मैं अपने वेबिनार्स को ना डिकोड करता हूँ. जब भी मेरा जाता है, आपको मैं दिखा दूं. Let me just share. Give me the screen sharing rights. I have the screen sharing rights. So I'll just share that with you quickly. You may proceed. So you will just see right now. So I have this. Yes. So अगर आप देखोगे यहाँ पे, yeah. So this is this. यहाँ पे all clouds में गए, यहाँ पे जाके मैंने डाल दिया वेबिनार PPT. आपको दिखाता हूँ कब से मैं डिकोड कर रहा हूँ अपने वेबिनार्स को. 17 दिसंबर 2021 है ये. ठीक है. मैंने पूरा देखा, पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ. यहाँ पे मैंने ये बात बोली, यहाँ पे ये बात बोली. उसके बाद आफ्टर यू डिड द वेबिनार यू रोट व्हाट एग्जैक्टली यू सेड एट व्हाट पॉइंट. यस. उसके बाद 27 को एक वेबिनार हिट हुआ मेरा, तो वो अच्छा कन्वर्जन था. मैंने कहा अब ये हिट हो गया, इसको बोलेंगे. इसको डिकोड किया पूरा बैठ के. ठीक है. उसके बाद एनर्जी शुड बी हाई फुल, इसमें मैंने सारी चीजें लिखी जो मेरे इंपॉर्टेंट थे. उसके बाद 3 नवंबर को फिर से डिकोड किया मैंने. एक अच्छा वेबिनार दिया मैंने, उसको पूरा डिकोड किया. उसके बाद फिर मैंने 24 फरवरी को डिकोड किया. तो आज भी जब भी मैं एक ब्रेक थ्रू मारता हूँ बड़ा, जैसे मैंने, तो मैं उसको डिकोड करने पूरा देखता हूँ और लिखता हूँ क्या क्या बोला मैंने, क्या इम्पैक्टफुल था. तो ऐसे आई डू दैट. ग्रेट. एंड लेट मी रिकॉल, रिसेंटली यू मेड अ ब्रेक थ्रू. आई थिंक 1 मंथ का आपने हाईएस्ट हिट किया था. Yes, 56 lakhs. 56 lakhs, wonderful. Yeah. So how did that jump come in now? I mean, क्या ऐसा decode कर दिया आपने कि वो 56 पे पहुंच गया एकदम से? And पहले कितना था? Yes, it is about a lot of value. So I'll tell you what. So everything starts from trust. If you want the people to pay you the money, so you need to give them 2 things: value plus trust. All right. You give them value and you give them trust that you are that authentic person. And trust cannot be bought. It cannot be bought with some cheap marketing skill. It is your character which reflects and the people see it. To bring that character, you have to do a lot of things. For me, it was a purely spiritual. I went into deep spirituality so people could connect with me. So I launched a very high-end program in the month of October only. And since then, the revenues has been, kind of from all my businesses, it is 50 lakhs. So like that. So I launched the higher end program. People saw the value that Abdullah is a person who is committed, and they just come up like in numbers, big numbers. So that was a 1 lakh rupees product, but now that has been priced, that has been increased to 1.5 lakhs, and still people are taking it. So it is like this. So that gave me a big jump. Got it. So you just now mentioned you invested somewhere and that changed everything. So how important is investing into something?
I Very mean, important. Unless you do yeah. not invest in some bigger programs, you do not have that guts, you do not have that moral authority to ask for that. Correct. Makes Right. sense. That's Right. true. Like it's like how if you yourself have never invested into something, then how can you ask that much? Yes, No, more than that you from cannot someone. preach what you have not done. Preach only the Hmm. things what you have done. So Correct. I invest every year. I think right now the Hmm. recurring which is every year goes up. Hmm. I think it is 12 lakhs rupees which I invest every year. Okay. Every Wonderful. year Wonderful. in programs. Recurring, it has to go. जाएगा ही जाएगा. Okay. वो बजट है आपका हाँ एजुकेशन मतलब का. हाँ जाएगा ही जाएगा. Hmm. So I'm invested in some programs जहाँ पे मुझे recurring I have to Hmm. pay those Hmm. masterminds. Hmm. So जब तक अपना नहीं मास्टर माइंड को ग्रो करेंगे तब तक Uh, कैसे लोगों को correct. हेल्प. Now, one more thing is coming in my mind. In the starting somewhere, you said, if you don't know anything, marketing is a skill which you have to acquire. You can become a digital coach. Now, what if there is a huge competition now in the market? Everybody is, becoming a digital coach. Earlier in 2020, it was a different game. Now 2023 is different. So many new coaches have taken over. So many webinars are happening. And now, even the consumers are aware of what would be happening in the webinars, all these things. Do you think such competition will come? I mean, such huge competition will come, and how will we will be able to outstand that particular thing? 2020 में जितना कंपटीशन था ना आज के टाइम पे उस टाइम पे जब आया था तब ज्यादा था. In 2023 people came, they tried and they left. This has happened. Okay? They came in excitement, they tried, they left because they did not have the vision and the mission. Only those people will succeed, चाहे competition हो या ना हो, those who have the vision and the mission what they want to do. Bang. Simple. आज से पहले फेसबुक एड्स वगैरह कुछ नहीं होता था. क्या बड़े बड़े ट्रेनर्स कोचेस नहीं बने हैं. बिल्कुल बने हैं. You take Tony Robbins, you take John C. Maxwell, you take Bob Proctor. They become good because they had that vision. So saying this, I have a lot of competition. Log aa gaye. The market is really huge. And I'm not saying because everyone says this. I've experienced this. Market is really, really huge. One person will take your program, will take another program, will take third program also. But you have to crack the game by communicating your vision and the mission so deeply so that they should be able to align themselves with you. क्या इस बंदे के साथ बड़ा हो जाएगा कुछ, इसके साथ लगे रहना है. So only those people will win. If the Facebook ads, Google ads, YouTube ads आज चले जाएंगे तो I'm not going to stop. I know मुझे कैसे जाना है. I have those ways also prepared. So there is no competition. I got it. Absolutely. That is what the message I wanted to bring to my audience, that there is no competition, definitely, and everybody's vibe is different. Somebody gets attracted to someone else, and a person who likes me will like me. I mean, he will come and take the course or my offer from me. It's like the right people attract with, I mean, the similar people attract with. Yes. That's absolutely the right vibe thing. will attract your attraction. Yeah, the vibe will attract your tribe, definitely. So how is your week? Let's not call it a day, but how does your week go? I mean, what all activities you do? Is it like going towards the freedom, or how is this? I mean, यार for अभी me, तो it is every day is मेरा busy, but घूमना how about बहुत, you? अभी मेरा ऐसा हो गया है. अभी मैं काम बहुत कम करता हूँ, ठीक है. But how I do work less because I have learned the art to build up the teams. पहले मुझे टीम बनाना नहीं आता था, ठीक है. टीम बनाना मुझे नहीं आता था. And I would do all the work by myself. मुझे लगता था मैं करूंगा तो अच्छे से करूंगा. That was my mistake. Now everything is through my team, my social media, my webinars, my wedding photography business, my agency. My only thing is to monitor. तो मैं दिन सुबह उठता हूँ लगभग 5:30 बजे. अभी उठ रहा हूँ आजकल, वैसे मैं 4:30 बजे उठता हूँ. और लगभग उठ के मैं सीधा डेस्क पे बैठता हूँ और आई वर्क बहुत फुल फोकस के साथ, इंटेंसली. एंड एट 9 AM मैं जाता हूँ अपना योगा मेडिटेशन साधना करता हूँ 1 घंटा, और आई डू अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स. उसके बाद 12-1 बजे तक काम करूंगा. उसके बाद मेरी छुट्टी हो जाती है. उसके बाद आई एम फ्री. आई हैव माय ओन डिस्क्रिशन, वोल्यूशन और चॉइस कि अब मुझे
ये करना है, अरे आइसक्रीम खाने का मैंने, चलो नेचुरल चलो। आई लव टू ड्राइव माई मर्सिडीज, तो मैं उसके साथ निकल जाता हूँ। तो आई लव टू ड्राइव, मतलब बहुत मजा आता है उसको चलाने में, उसके साथ ही चले गए कहीं पे। तो आई वर्क बाय चॉइस नाउ, बाय गॉड्स ग्रेस, दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम माय लाइफ, सो दैट आई कैन हैव टाइम फॉर माय स्पिरिचुअल रिक्रिएशन। ठीक है, शाम को कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ साधना किया, देखा, सो ऐसा। सो मेरा दिन में 4-5 घंटा काम करो, बाकी दिन अपनी चॉइस से बैठो। आई स्लीप जस्ट फॉर 5-6 आवर्स मैक्सिमम। ओह वाओ, स्टिल आई मीन उससे Because ज्यादा सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, मुझे मेरी बॉडी खुद उठ जाती है, बिकॉज उड़ आई जाती है, एम करेक्ट। प्योरली वीगन, यू नो। अंडा, दूध, मांस, मछली छोड़ दिया मैंने, तो बॉडी बहुत लाइट हो गई। इट हैज कम टू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी नाउ, बहुत स्टेबल है, मजा आता है। सो नेचुरली जब आप बॉडी को लाइट रखते हो तो आपकी नींद कम हो जाती है। दैट्स अ योगिक थिंग। Correct. आई So हैव डू दैट। how did these things come into you? How did this spiritual angle came in your life? I mean, who impacted you? कोई ना कोई तो होता ही है, कोई book या person. I did a program called name as Inner Engineering by Sadhguru. Oh yeah, yes. So I did that program on 10th March 2020, and the moment I did that, from that day I decided that I will leave all the non-veg stuff, everything, and that was the day I left everything. I became very clean, and it impacted me in a big way. So उसमें इंटरेस्ट बन गया बहुत ज्यादा, और जाते चले गए। I started to explore more and more, and then I still, that is my peak interest. मुझे सबसे ज्यादा इंट्रिग करता है आज भी वो। फिर प्रैक्टिस किया लाइफ में, तो बहुत स्टेबिलिटी आया। Nice. तो सदगुरु was a person who impacted me for the spirituality. Wow. Great. Even my wife follows him. She does Shambhavi every day, every morning. She's doing for more than a year now. Yes. But मेरे को नहीं समझ आया अभी तक. Shambhavi will make you ageless. Shambhavi is the thing. Shambhavi is the main secret of all the business, I would say, because it gives me a big, when I do Shambhavi, every day, ऐसे ideas मुझे टिक होते हैं ना, जो गेम चेंज करते हैं मेरे business में. Seriously, that happens? Yes. So when you do all that secret practice, तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, और आपको बड़ा खींचने के लिए ना आपको कॉन्शियसनेस लेवल ही बढ़ाना है। तो वो उस समय का जो थॉट्स मुझे आते हैं ना, आइडियाज जो आते हैं, पूरे दिन में नहीं आते। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। मैं काम करता हूँ, कार में बैठता हूँ, ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, इट डज नॉट हैपन। लेकिन उस टाइम जब मैं अपनी प्रैक्टिसेस कर रहा होता हूँ, शांभवी जब मैं कर रहा होता हूँ, बूम हो जाता है। बड़े बड़े आइडियाज मेरे बिजनेस में, बड़े बड़े आइडियाज मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े, जिसने मेरे बिजनेस को सीधा 10x ग्रोथ दिया है, इट हैज कम फ्रॉम शांभवी महामुद्रा ओनली। Wow. Now you have sold that program to me. I will ask my wife to teach me that. She does it every day. Yes, so she'll not be able to teach you. If she will be teaching you, she will not be able to do that. वो 21 मिनट का प्रैक्टिस करने के लिए 3 दिन का वो सेशन चलता है ऑनलाइन। Okay. So it is not technically humanly possible. मैं भी नहीं बता सकता आपको, उसमें बहुत बारीकियां हैं, बहुत बारीकियां हैं, और वो बारीकियां आप जब लाइव अटेंड करोगे तभी होगा। Got it. Wow. That was amazing. So we have almost come towards the end of the session, and thank you so much for giving me these 30 valuable minutes. Towards the end, I just want to ask you one little thing that you think, that was something that it's like a success mantra for you, that one mantra that you want to give to others, that yes guys, this is something which is non-negotiable, something kind of stuff, which can literally change their lives. The challenge with the people is that people are living constipated life. Very simple. Constipated life means if they are doing something, they are not putting their heart into that. No, they are not fully involved. Vivekananda says one thing very beautiful. Swami Vivekananda, he said, playing football, I am much more closer to God than studying Gita. This is a very controversial term. That when I play the football, I'm much more closer to God than studying Gita. Why he said that, I'll tell you. Because the beauty of life is to
make yourself involved into the process, not in the Hmm. product, not into the outcome. Hmm. When just remember, when you play football or cricket, what happens? You just forget everything. You are just into that. You are just into that. You just have one goal. I have to take this piece of this ball into the goal. That's the only goal. And to do that, you do not care what is happening. You just give your heart, everything. This is just is needed with your life. Don't be serious. Just be sincere. It's just a play. You just need to be involved. What you are doing. And how to tackle the failures. Even if it is coming, failure is coming, whatever is coming, just get involved. Why it has happened. Got it. When you attach yourself with results, I was listening to a Bhagavad Gita shlok today. Karmanye vadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karme phal heturbo te ma te sangost vikarmani. जो इंसान अपने कर्मों से आशाएं और अपेक्षाएं नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं. फेलियर का क्या है? Just ask yourself one question. Did you give 100% into that? Yes, I gave. फिर तो टेंशन ही नहीं. एग्जाम में देने जाता था ना, मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में फेल हो गया था अपने कॉलेज के दिनों में. आई गॉट 18 मार्क्स. आई बैक आया मेरा. लेकिन आफ्टर द एग्जाम आई वाज जस्ट आई फेल्ड. आई न्यू भाई मैं फेल हो गया हूँ, क्योंकि मुझसे सवाल जो मैं करके गया हुआ ही नहीं. लेकिन उसकी तैयारी में मैंने 100% दिया था. ठीक है. I just gave myself, पूरी रात पढ़ा था. Still I failed. But I was happy. I gave my 100%. So what? I was involved in that. So this is what I learned. Awesome. Long back. Don't be serious. Problem with the people is they get so serious. ये हो गया, वो हो गया. No. लोग क्या कहेंगे, तब क्या होगा, वो क्या. Just be sincere. Just be sincere. Sincere means be involved. Give your heart into that. Just be 100% into the game. Either you play 100% or you do not play. Correct. In between, it's just a waste of time. Let me tell you. Great. I also took such major step recently on 7th of April. Just to go all in, I left my job, like government job. Go 100% now. Had to do it. I mean, वही same कहानी. मेरा heart, मतलब मेरा conscious मुझे allow नहीं कर रहा था to be there in the office and do something which I was not loving. So I just thought, if others can do it, say it's like this game, if you can do it, if those people can do it, I was in the right network. So why cannot I do it? Definitely I will figure this out. If not today, tomorrow. Fear, डर से भाग जाते हैं लोग. Yes. बड़े इंटेलिजेंट लोगों को मैंने गिरते हुए देखा है सिर्फ फियर की वजह से. मेरे कई दोस्त IIM के एक्सट्रीमली टैलेंटेड. मैं उनसे कंसल्टेशन लेता हूँ, ऐसे ही यार पूछता हूँ, एडवाइस लेता हूँ और उनकी एडवाइस अपने बिजनेस में अप्लाई कर देता हूँ. लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ जो करना चाहते हैं वो करे लाइफ के अंदर. दैट इज द चैलेंज. Absolutely. Fear of change or something. I think next program मुझे पता आप क्या लॉन्च करोगे. आप लाइफ कोच बन जाओगे. I'm just whatever I'll do, I'll just give it. I'll just play 100%. Wonderful. So thank you so much, Abdullah. It was I felt so blessed to talk to you, and I think audience को तो benefit हुआ ही हुआ होगा. मेरा तो कुछ तो हिल गया यहाँ पे अभी. मुझे ऐसा फील हो रहा है. Literally. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा है, हिला है तो just go and do it. Yeah, man. Thank you so much for giving your time, Abdullah. Thank you so much. Thank you so much. Love you all.